Hello everyone, this is Vikas. Welcome back to Legendary Coding with Vikas. So guys, in yesterday's class, we have covered the difference between C, C++ and Java. And today also guys, I'm going to discuss about difference between C, C++ and Java. So let's start our today's session guys. So guys, in yesterday's class, we have covered developed by model and platform dependency of C, C++ and Java guys. And today I'm going to discuss keyword, preprocessor directive, inheritance and pointers guys. Okay. So in C guys, there are 32 keyword are there. And if we are going to talk about C++, there are 63 keyword. And in Java, there are 50 keyword guys. Now come to preprocessor directives guys. It is one of the different differentiation guys. So before going to discuss this differentiation, I want to give a small example guys. So guys, now I'm in my Eclipse and let me create my class guys. I want to create a class. So guys, I want to create my class inside legendary coding. This is my project, and inside this project in package one, in pack one package, I'm going to create my class guys. So let me create my class. So I'm going to create simple class A. तो गाइस आप देख सकते हो मैं क्लास से मेरा क्रिएट कर चुका हूँ एंड इनसाइड दैट क्लास आई एम गोइंग टू क्रिएट ए मेथड गाइस. सो लेट मी क्रिएट माय मेथड 1 एंड keep this method as public guys. Its access modifier is public, and inside that method I am going to print a statement guys with the help of system.out.println. I am going to print this is class A, and I want to print another statement guys, method 1 call guys. Let me write method 1 call, and inside that class I'm going to create my main method, and inside that main method guys I'm going to create an object of class A, object equal to new class A constructor guys, and with the help of object I'm trying to call my method 1 guys. Okay, now I'm going to create another class. So let me create my another class, and I want to create that class inside a pack 1 package, and the name of this class is class B guys. Just a second guys, I want to keep like this. So you can see that this is my class A, and now I'm going to create my class B, and I've already created class B, and inside that class I'm going to create a method, and the name of that method is method 2, and inside that method I want to print same statement like method 1. So let me copy this statement. So guys, this is class B and this is method 2 call guys. So now guys, I want to access method 2 guys. I want to access method 2 inside my class A guys. So can I do this? Method 2 is present in another class guys. As you can see that method 1 is present in class A and method 2 is present in class B, and I want to access method 2 inside my class A guys. So as we all know that to access a method, what we need to do guys, to access any method, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लास गाइस. सो मेथड 2 किस क्लास में है गाइस? क्लास बी. तो मेथड 2 का रेस्पेक्टिव क्लास क्या है? क्लास बी गाइस. तो हमें मेथड 2 को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम मेथड 2 को कॉल कर पाएंगे गाइस. सो लेट मी ट्राई गाइस. क्लास बी ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू क्लास बी गाइस. Okay, and with the help of this object I am trying to call object 1 dot method 2 guys. object 1 dot method 2. So guys, आप देख सकते हो मुझे कोई एरर नहीं आया. मैं क्लास ए के अंदर मेथड 2 जो कि क्लास बी में प्रेजेंट है गाइस, उसको मैं एक्सेस करना चाहा, और उसे एक्सेस करने के लिए क्लास बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं मेथड 2 को इजीली कॉल कर पाया गाइस. सो लेट मी रन दिस कोड. सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज क्लास ए मेथड 1 कॉल गाइस. तो हमने क्या किया था, हमारे जो क्लास ए में पहले मेथड 1 को कॉल किया था, उसके बाद मेथड 2 को कॉल किए थे गाइस. ठीक है. सो मेथड 2 कहाँ है गाइस? क्लास बी में था. तो हम क्लास बी से मेथड 2 को एक्सेस किए गाइस, कॉल किए. तो आप देख सकते हो दिस इज क्लास बी एंड मेथड 2 कॉल गाइस. ठीक है. सो हमने क्या किया, टू डिफरेंट क्लास आर प्रेजेंट इन सेम पैकेज गाइस. आप देख सकते हो इसका जो पैकेज है पैक 1,
क्लास बी और क्लास सी दोनों पैक 1 में थे, तो हमने इजीली डिफरेंट क्लास का मेथड को गाइस विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट हम इजीली कॉल कर पाए गाइस, ठीक है। So guys, I want to create another class, but before going to declare a class, guys, I want to create another package. So let me create a package, and the package name is pack2, guys. Let me pack2, and okay, guys. So guys, I have already create pack2 class, and now I'm going to create another class, and I want to create that class inside package2, guys. Pack2. I want to create that class. So let me create a class, एंड आई वांट टू क्रिएट दैट क्लास इनसाइड पैकेज 2 गाइस। आप देख सकते हो ये पैकेज 2 है, तो मैं पैकेज 2 के अंदर में जो क्लास मेरा क्लास सी है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ गाइस। सो आप देख सकते हो ये मेरा क्लास सी है। तो गाइस ये मेरा जो क्लास बी था, ये मेरा क्लास बी, ये मेरा क्लास ए था, दोनों पैकेज 1 के अंदर थे गाइस। और मैं अभी एक क्लास सी बनाया, और वो किस पैकेज के अंदर है, पैक 2 गाइस। नाउ लेट मी क्रिएट अनदर मेथड inside class C. So let me copy this code and try to paste here guys. So this is my method 3, and this is my class C, and this is guys my method 3 guys. So guys, मैं जब क्लास A में मेथड 2 को गाइस एक्सेस किया, तो मैं इजीली कर पाया गाइस, क्योंकि जो क्लास ए और क्लास बी थे वो दोनों पैक 1 पैकेज के अंदर थे गाइस। तो क्या गाइस, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका रेस्पेक्टिव क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम मेथड को कॉल कर पाते हैं गाइस। तो क्या हम क्लास सी मेथड 3 के लिए क्या ऐसे कर पाएंगे क्या गाइस? तो लेट्स ट्राई करते हैं गाइस। तो हमने क्या करना है, पहले क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू न्यू क्लास सी गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे को एरर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये एरर क्यों आ रहा है गाइस? सो लेट मी कीप दिस कोड इनसाइड माय कमेंट। सो गाइस, if there are two class are present inside a same package, as you can see that my class A and class B are different class, and both the class are present in pack 1 package guys. If guys two classes are present in same package guys, as you can see that class A and class B are present in pack 1, which are in same package guys. If two classes are present in same package, and if you want to call the method of one class into the another class, then we can easily access that method with the help of their respective class object guys. Okay, so guys, if there are two classes are present in different package, so as you can see that my class A and class C are present in two different package guys. Class A present in pack 1 and class C present in pack 2 guys. Okay, so in this case, if I am trying to access method 3, so that I will get error guys. I cannot directly access method 3 in class A guys. Okay, so to do that, I have to use import statement guys. There is import statement. Let me write this import. So guys, जो class C है उसे हमें क्या करना है, पैकेज 1 के अंदर हमें import करना है guys, ठीक है। तो class C को एक्सेस करने के लिए import, उसके बाद हमें क्या करना होगा गाइस, उसका जो पैकेज का नाम है फुल्ली क्वालिफाइड नाम देना होगा क्लास का। तो पैक 2 के अंदर क्लास सी है गाइस, ठीक है। तो क्लास सी गाइस। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्टेटमेंट, देन आई विल नॉट गेट एनी एरर गाइस। सो लेट मी शो यू। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे को अभी कोई एरर नहीं आया गाइस, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने जब इंपोर्ट किया पैकेज 2 डॉट क्लास सी को, जो जब मेरे पैकेज 1 में इंपोर्ट किया गाइस, तो यहाँ जो एरर आ रहा था गाइस वो एरर रिमूव हो गया गाइस, ठीक है। नाउ आई कैन कॉल my method 3 in my class A guys with the help of object 3. Now I can call my method 3 guys. तो आप देख सकते हो guys, so if there are two classes are present in same package, then we no need to import any statement guys. Okay, but if two classes are present in two different package, and if we want to access the method of one class in another class, then and if the both classes are present in two different package, then we need to declare import statement guys. So guys, if we want to access 100 class guys, I mean if there are 100 class present in package 2 guys, if there are 100 or more than 100 class present in package 2, and if we want to access all that classes guys, so can we write 100 time import pack 2 class C, import pack 2 class D like this? No guys, उसे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है गाइस, pack 2 डॉट, अगर हम यहाँ स्टार कर देंगे गाइस, अगर यहाँ स्टार लिख देंगे, तो स्टार का मतलब क्या है गाइस, पैक 2 के अंदर पैक 2 के अंदर जितने भी क्लास है गाइस वो ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो गया गाइस, ठीक है।
तो इससे क्या होता है गाइस, मान लीजिए हमारे पैकेज 2 के अंदर 1000 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं और उस क्लास में से हमें सभी को अगर एक्सेस करना पड़े तो हम क्या करेंगे गाइस, स्टार यूज करेंगे गाइस, ठीक है। और अगर हमें उस 1000 में से और गाइस उस 1000 में से अगर हमें ओनली वन क्लास को एक्सेस करना है गाइस, इंपोर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, उस पैकेज के नाम और उसके साथ जिस भी क्लास को हमें इंपोर्ट करना है गाइस, उस क्लास के नाम लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जावा में हम क्या कर सकते हैं, 1000 क्लास में से एक क्लास को भी इंपोर्ट कर सकते हैं गाइस और 1000 में से 1000 यानी सभी क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं गाइस। नाउ कम टू preprocessor directive. But if we are going to talk about guys C and C++, to import a package guys, C support include method guys, has include and has define guys. Okay, in C we can use has include and has define, and in C++ guys also we use has include and just a second, has include and has define guys, has include and has defined. But if we are going to talk about Java, there is no support of has include and has defined guys. So let me write. So guys, has include and has defined is support guys. In C, it support has include and has defined. But if we are going to talk about C++, it is also support. It also support has include and has defined guys. But if we are going to talk about Java guys, it does not support has include and has defined. So let me write. Java does not support this future guys. Instead of has include and has defined, in Java we have a statement, we have a keyword like import guys. So guys, in Java, if you want to import a package, then we use import statement guys. So guys, what is the difference between import and has defined guys? So guys, if we are going to compare between import and has include and has defined guys, like C support and C++ support has include and has defined guys. In this case, क्या होता है गाइस, अगर आपके पैकेज के अंदर 1000 से भी ज़्यादा क्लास हैं तो हैज इंक्लूड और हैज डिपेंड, उस 1000 क्लास में से गाइस अगर हमें एक क्लास की भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, वन क्लास की इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तब भी हैज इंक्लूड में क्या होता है गाइस, हम किसी एक क्लास को इंपोर्ट नहीं कर सकते गाइस। हैज इंक्लूड हैज डिपेंड में क्या होता है गाइस, किसी एक क्लास को हम इंक्लूड नहीं कर सकते गाइस। If you use include statement, then all the classes present in package will automatically imported guys. But if we are going to talk about Java, there is a import statement feature and that support both guys. If you want to access one class, then you can use directly class name, and if you want to access all the class from the package, then you use star keyword guys. So now going to inheritance guys. So guys, if we are going to talk about C does not support inheritance. C++ support inheritance guys. C++ support inheritance. Just a sec. It support inheritance. And if we are going to talk about Java is also support inheritance guys. Now come to pointers guys. C support pointers. C++ is also support pointer guys. C++ is also support pointer, but Java does not support pointer guys. So guys, pointers are eliminated from Java, and in the replace of pointers, we have a concept of reference in Java guys. So this is for today guys. I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।